हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट एट द वर्ल्ड कप। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं फिलहाल बर्तानिया से उस्मान समीउद्दीन और इस कमरे में एक भटकती आत्मा की तरह मेरे बिल्ले सिगी भी पीछे कुछ चीख चिल्ला कर रहे होंगे। सिगी से हम बाद में बात करेंगे। उस्मान, हाउस इट गोइंग? इट्स गोइंग ओके। मुझे थोड़ी सी डिसओरिएंटेशन हो रही है, इसलिए हम लोग कोई एक ग्रेट फास्ट बॉलिंग स्पेल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आई फील लाइक आई एम बिट्रेइंग आवर ओन ethos as well as our millions and millions of listeners that we've built up दैट over इज the ट्रू, इट्स अ last बिग सरप्राइज। मगर शुरू करते हैं कि ये क्रिकेट का 13वां वर्ल्ड कप आज शुरू हुआ है और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप्स की कितनी 50 साल तारीख में, 48 साल तारीख में ये सबसे मायूस कुन इफ्तिताह थी किसी भी वर्ल्ड कप की। आई मीन ऐसा लग रहा था कि आप ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड 2020 का एक ग्रुप मैच देख रहे हैं कि मतलब कि हमें लग रहा था कि मोदी जो है वो इंडिया को साउथ कोरिया बनाएगा कि भाई कल्चरल पावर, टेक पावर, इकोनॉमिक पावर। उन्होंने नॉर्थ कोरिया बना दिया है, बड़ा सा स्टेडियम है जो जिसमें उतने ही फॉरनर है जितने नॉर्थ कोरिया के अंदर होते हैं। Have you seen start to the World Cup? Yeah, I'm trying to think back. Like I can't remember anything. I can't remember. Like I can go back to like 87 तक का मुझे याद है। और वर्ल्ड कप हमेशा एक एक मैं ये चीज कहूंगा। आई विल से वन थिंग इज दैट एक्चुअली आई एम नॉट 100% श्योर दैट वी आर बेटर ऑफ विदाउट एन ओपनिंग सेरेमनी, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड एमनवी, बट जो स्पोर्ट्स इवेंट्स की ओपनिंग सेरेमनीज होती है ना, दे आर द बिगेस्ट suckiest things in the world. Like they're a waste of money. They're absolutely sucky. So I don't know if I missed having an opening ceremony. I know Tendulkar came out and like waved to like empty stands and stuff. दो दो ख्याल आते हैं इस पे। एक के ओपनिंग सेरेमनी इज लाइक पेनल्टी किक्स कि इट्स लाइक फक्ड अप, लाइक इट्स मतलब कि आपको देखते वक्त होता है कि यार ये क्यों हो रहा है बेचारे, इट्स हॉरिबल, बट यू आल्सो हैव टू सी इट। इट्स लाइक अ कार क्रैश, यू हैव टू सी Yeah, इट, यू नो। ये तो बात और है। दूसरा कि अगर सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है जो ओपनिंग सेरेमनीज कर करने सकता के है। लिए बना है तो वो इंडिया है। मतलब कि आई फील दे हैव अ बिलियन अवार्ड And शो। actually this is one of the things that अभी किसी को डेफिनेटली मालूम ये नहीं है विद लाइक 100% क्लैरिटी कि ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं हुई है। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि शायद इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा जिसपे द पीएम माइट कम, उस पे शायद ये लोग प्री मैच कुछ करें, बट लाइक इट्स कंप्लीटली एंड आई थिंक एक एक तरह से ये इंडिकेशन है इस वर्ल्ड कप की जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। पिछले वर्ल्ड कपों में आपके पास वर्ल्ड कपों में आपके पास हमेशा एक लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रही है, which is like it works with ICC officials in it and the home board officials in it, and they come together and they're very prominent, they're very active, और वो अनाउंस होती है और लोग को मालूम होता है कौन होता है इन कमिटीज में। इस बार इस कमेटी के बारे में बहुत कम हमने सुना। देयर इज लाइक डाउट कि ये एक्चुअल कमेटी इस तरह की थी भी या नहीं, यानी सब चीज थे, ऑफिशियल्स थे आई थिंक, मगर इतना रोल आई थिंक जो उसकी ऑपरेशनल फंक्शन होता है ना, वो आई थिंक it wasn't as well defined as it has been in the past in other events. So I think like that, then the ticketing thing, which I'm sure we'll talk about, कि fans इतने कम थे, ये सब चीज मिला के एक perfect storm of a shitty opening of आई मीन अगर जो देख रहे हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शारदा उग्रा ने बीसीसीआई के चीफ जे शाह पे एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है जिससे आपको अंदाज़ा होता है द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस दैट्स प्लेगिंग द बीसीसीआई राइट नाउ। और वही हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया था जब टिकट्स नहीं बिक रहे थे। इस मैच में भी जो ऑफिशियल स्टेडियम वेबसाइट पे जो है तो उसमें ज़्यादातर स्टेडियम बिका हुआ है, कुछ ही जगहों पे सीट्स मौजूद थी, राइट? बट लाइक एज वी कुड सी इट वाज एम्प्टी फॉर मोस्ट ऑफ द डे। यू हैड द स्केड्यूल चेंजिंग अंटिल द वेरी लास्ट मिनट व्हिच इज प्रिपोस्टरस। और फिर मैंने जाके देखा था तो आज तक तमाम वर्ल्ड कप्स में जो ओपनिंग मैच होता है उसमें मेजबान टीम खेलती है। लाइक सो इंग्लैंड में जब पहले 3 वर्ल्ड कप हुए थे तो पहले दिन पे 4 मैचेस होते थे, बट उसमें हमेशा लॉर्ड्स पे इंग्लैंड का मैच होता था। 87 में पहले दिन पाकिस्तान श्रीलंका हुआ, दूसरे दिन इंडिया हुआ। उसके बाद से सारे वर्ल्ड कप्स में पहले दिन पे होस्ट का मैच होता है, सिवाय दिस इज अमेजिंग 1996 का ओपनिंग मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड एट अहमदाबाद and there's a full crowd for it. But yeah. are you telling me that cricket is less popular now in India than it was? No, but actually ये जो and I saw those tweets, I saw those examples,
it's definitely true that people have less time to spend a whole day at a ground now like they used to. I think that's अरे 100% यार, true. फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप इन नॉट नहीं, द वर्ल्ड कप यो ठीक है वर्ल्ड कप यो, but you know the other truth that's come from this, और ये बहुत दिनों से एक truth है, like people like you know who नहीं नहीं cover. नहीं नहीं Usman, I won't even let you finish this thought because when PSLs happened in another desert country, Indians would हाँ, be going crazy at us. When the Asia Cup happened right now, which India had forced to take out of Pakistan, they again were like opening ceremony में इतना कम लोग क्यों हैं? तो भाई अब आप बताएं, like where are the, like I know what you're saying, what I'm but I doing think is it doesn't mitigate. I'm explaining to you the India, like kind of the crowd audience thing in India, which is, you know, like we keep saying that cricket is like so crucial and cricket in India is so crucial for the rest of the game. But I think what's becoming evidently more, well, it's been clear for years now, is that India में जो लोग cricket, you know, who are cricket mad, उनकी जो primary passion है ना वो Indian cricket team की है. That's why the IPL is such a success, because you know India never loses famously. IPL में कभी नहीं हारता है. उसमें हमेशा आपकी हर टीम में 7 या 8 इंडियन प्लेयर्स होते हैं. जो 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 पैशन है, एंड ओके व्हाटएवर इट इज, जो मगर जो पैशन है गेम के लिए उस मुल्क में, वो और आज आई थिंक ये जाहिर हुआ है और इस टूर्नामेंट में होगा ये, आई थिंक और भी क्लियर होगा, वो पैशन है इंडियन क्रिकेट के लिए. In a way that is different to like say जैसे इंग्लैंड में पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था, I was there at the opening match. I've been, you know, I was around at other matches. कई मैचेस में क्राउड्स नहीं आए थे इंग्लैंड में भी, बट बाय एंड लार्ज जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ गया था, यू नो पीपल न्यू ईयर इन एडवांस कि ये मैचेस यहाँ है, ये मैचेस यहाँ है. तुम्हें पता है कि यहाँ लोग प्लान करते हैं हर चीज 11 महीने 12 महीने इन एडवांस. सो दे न्यू. That's what I'm saying, right? कि अगर ये हम के इंडिया में लोगों के पास टाइम नहीं है और इंडियन क्रिकेट सिर्फ देखते हैं, नहीं तो सिर्फ वो नहीं है, नहीं yeah, that might explain मतलब 10% 20% कमी, but end of the day पे जो मैं ये बात सोच रहा था कि भाई अब आपका ये मार्की इवेंट है, 4 साल में एक दफा होता है. अभी आज स्पेन में जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का न्यूज़पेपर है तो AS, तो उस पे, और वन ऑफ द बिग पेपर्स, तो दे हैड अ फीचर कि जी, did you know of World Cup cricket is starting, did you know once Real Madrid and Barcelona tried to have a cricket team, because when there's an event like this, rugby world cup हो रहा है, लोग जो आउटसाइड द स्फीयर होते हैं वो भी उसे रेफरेंस करते हैं. आज जब भी विजुअल्स जाएंगे, they are a joke, it's an embarrassment, like you're going to see the two finalists play in a completely नंगा ग्राउंड जिसमें एक बंदा और बंदे की जात नहीं है, and that's your, you know, the football or the rugby world cup's happening right now. look, there's like zero doubt about it. The match started like with a terrible look कि कोई था नहीं वहाँ पे, बेचारा सचिन came out and waved to nobody, and you know I think for the first innings, पहली innings में तो crowd एकदम ही खाली था, there was nothing there, and you know you also wonder then यार अपन ने फिर एक कोई और स्टेडियम में चले जाते, इतना जो बड़ा स्टेडियम है जिसमें वैसे ही you're going to struggle to fill any, like apart from the final and an India Pakistan game and maybe some other India games, आप उस स्टेडियम को फिल नहीं कर पाएंगे. तो आप फिर किसी और स्टेडियम में क्यों नहीं चलेगा? आप बैंगलोर में खेल लेते, आप चेन्नई में खेल लेते, आप मुंबई में खेल लेते, वहां आपका स्टेडियम गारंटी फुल होता. बिकॉज अगर यहाँ आपके 25,000 लोग भी आ जाए ना, आई थिंक द ऑफिशियल फिगर इज 47,000. I don't know, like cricket poker reporters जो वहां थे वो कह रहे थे कि यार it's a bit of a stretch, but like 30-35,000 end तक तो थे. अगर आप किसी और स्टेडियम में 30-35,000 को डाल देते, then it would look like a pretty full stadium. Most cricket stadiums in the world, it would look quite full, you know, apart from colleges. So why did you not have this match? One, आपने टूर्नामेंट इंडिया के साथ क्यों नहीं ओपन करा अगर आपको यहाँ करना था? टू, आपने ये मैच किसी और स्टेडियम में क्यों नहीं खेला अगर आपको इसी के साथ ओपन करना था? 3, आपने टिकट्स ऑन सेल वर्ल्ड कप से कितने 40 दिन पहले ऑनलाइन बेचना शुरू करिए. 40 दिन 50 दिन शायद उससे भी कम. स्केड्यूल आपने 60 दिन पहले, 60 दिन से कम के पहले आपने फाइनलाइज करा. तो ऑब्वियसली यू नो लाइक वही मैं कह रहा था शुरू में कि एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ एवरीथिंग दैट इज काइंड ऑफ हैपेंड इन द रन अप टू दिस वर्ल्ड कप came home today. And like you know it's only the first game. India खेलेगा और I think you know other teams will have some following. Smaller grounds में I think आपकी crowds decent number की होंगी, मगर वो जो एक central truth है क्रिकेट की और इंडियन क्रिकेट की is that the love is primarily for Indian cricket first and foremost in India, and the rest of the world, you know. That's what I'm saying. Okay, this, yes, love is for Indian cricket primarily, but भाई एक देसी मुल्क में ओपनिंग मैच के लिए क्राउड भरना मतलब वो मैं आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ला दूं वो भर के दे दें. नहीं होना चाहिए मुश्किल. मतलब
ये कोई इसमें it's a joke. Like that's like the level, the bare minimum that you have to achieve. And it can be full of, people who don't follow the game, people who have no idea, which there are videos of women showing up who've been promised food और कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो वो Yeah, उनको वो सीट वीडियो बढ़ाने वायरल देखने हुआ आएंगे था। यार तो Yeah. मतलब आप वो भी नहीं ऑर्गेनाइज कर सके अगर है the other compounding factor, which obviously you can't blame the organizers, was that it was a boring, boring match that ended 15 overs too early, or at least a one-sided match. Like England, हाँ, one side. England lost their middle order to part-timers. मतलब अगर पाकिस्तानी करें तो आप इसे फिक्सिंग कहते और उसके बाद उनसे रन भी नहीं बने और फिर न्यूजीलैंड ने उनको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा. Like that was just यार brutal. मैं ये कहूंगा आई थिंक बिकॉज आई गेस ओपनिंग मैच था मुझे बोरिंग एकदम नहीं लगा प्योरली बिकॉज एक एंटिसिपेशन थी और इंग्लैंड में रह के यू फॉलो द इंग्लिश टीम सो मच दैट आप काफी उसमें यू गेट इनटू द वीड्स ऑफ इट कि किस तरह से डेवलप हो रही है किस तरह से खेल रही है कॉम्बिनेशन क्या है इंग्लैंड टीम की तो हैरी ब्रुक was playing today everyone was quite excited about that but I think जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी है ना I think that kind of made up for the one-sidedness of the concept of the contest because if you look at Devin Conway की story अच्छी मजे की story है in the sense that South Africa से वो आए न्यूजीलैंड it's not like it's not like this great romantic story he moved from South Africa to New Zealand but I will say that some of his cover driving and straight driving was pretty beautiful to watch like I will not deny that and also Rachin Ravindra's innings was like just outstanding. Like Pakistan के खिलाफ उसने अभी warm up match में जो runs बनाए थे, England के खिलाफ भी बना चुका है वो England में. Like just watching this young kid come out who was like what he said I think later or it came out that जब पिछला जो final हुआ था 2019 में वो 19 साल का था कहीं बाहर में बैठा हुआ match देख रहा था and he thought like I never thought that I would be at like the next World Cup game for New Zealand and to come out and to play the way he did. To be so young and to just be so sure in his shots and his shot making and just backing himself was actually quite like installing and beautiful to watch. Like how he just came out and took apart what is not a bad attack. I know they're missing like Joffre and all, but England started so badly with the ball that आज कुछ और ही सीन था क्रिस वोक्स का. ये कभी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होती है क्रिस वोक्स की. आई थिंक एक तो मुझे वही क्या कहते हैं ट्रिगर हो रहा था कि दाढ़ी वाले ब्राउन बॉयज को दबा के छक्के पड़ रहे थे तो लाइक आई फील थोड़ी देर के लिए तो मेरा वही ट्रिगर हो रहा था कि पाकिस्तानी ऐसे पिट रहे होंगे एंड आई मीन आई लाइक श्योर you can you're drawing a lot of positives out of absolutely nothing because like वो पहले 5 ओवर में ही उसकी कोई सारी मतलब रन रेट रिक्वायर्ड 4 पे आ चुकी थी या कुछ उन्होंने इतनी धुलाई की थी or at no point did England look like they were getting wicket. And I felt what was irritating also was that England kind of ringte आए और फिर उनकी इतनी crazy batting lineup थी and they just kind of like deep mid wicket पे हैरी ब्रुक आउट हो गया मोइन अली ने हाफ ट्रैकर मिस कर दी मतलब फजूल विकेट उन्होंने दे दी and their innings went nowhere. थोड़ी बहुत like न्यूजीलैंड को थोड़ा सा भी क्रेडिट तो आप देंगे I think Tom Latham the way he utilized ball yeah he definitely and the interesting thing about New Zealand it was such apart from the batting it was such a New Zealand performance right to kind of keep England down and to like maximize their resources. I know एकदम stereotyping होती है न्यूजीलैंड की इस तरह से नहीं मैं यही सोच रहा था कि न्यूजीलैंड बेसिकली आपकी फैमिली में या आपके जानने वाले में एक बहुत ही शरीफ कोई साहब होते हैं जो अपने टैक्सेस हर दफा भरते हैं और कि वो बस और रिक्शे पे ही जाते हैं और घर में खाना कभी जाया नहीं होता है हाँ ठीक है और वो अक्सर रात को भूखे सो जाते हैं और वो बकरी और बिल्ली को खाना देते हैं वो उनके पास कभी भी ज्यादा पैसे वैसे नहीं होते बट इज्जत बड़ी होती है. That's New Zealand, like they live life the right way. You really admire them. You're like, mashallah, से मेरे बच्चों की इनकी सोबत पड़े. But you can't live that life. And I wanted to like, I got like caught into this Twitter debate जो मिसबाह हक ने आज बोला है कि पाकिस्तान ने C team और D team को हराया. It's just worth pointing out that this team that beat England of New Zealand, they were missing what? Kane Williamson, Tim Southee, Lockie Ferguson, and Ish Sodhi. That's 4 out of 11 players who are arguably like Sodhi in conditions, but arguably their first choice regulars. So 7 of those guys were not in this team, and they just whooped. It's not just 4 regulars; it's like at least 3 superstars.
right? Like Yeah, Saudi, yeah, Ferguson, and Kane are their top players. yeah. And Southey and Williamson have been at the 2015 World Cup, the 2019 World Cup. Lockie Ferguson was part of the attack in the last World Cup. Like these are proper giants, right? और उन्हें इतनी इतनी बेरहमी से इंग्लैंड को हराया है तो like I get what Misbah was trying to say with those comments, and we will talk about Pakistan. I get what he was trying to. I think he was trying to make the point that number one ranking up, sir pe na lene. But dude, like just see the room, read the room of what you're saying, read yourself. You're like a tech committee head. क्यों आप ये कह रहे हैं? You're like I you're mean, still involved with the PCB. other than Chairman PCB, Misbah Haq has had every job at PCB. So I feel like he wants to criticize the PCB. He's still in the PCB as we speak, as he speaks. Yes. So I don't want to say much, but like yahin pe hamara आखिरी seg with the last 5 minutes. Pakistan plays tomorrow. Again, Netherlands. I have like the very youngest अपनी जवाब बिल्कुल बचपने में जो पाकिस्तान की हॉकी टीम को नेदरलैंड से हारते हुए देखा है तो एक एक Boglander, रेसिडुअल Boglander. The yeah penalty penalty. Bolivander exactly so but apart from that just like I feel that I was pretty confident and I'm not anymore about Pakistan. Yeah, What I are you think ये foreseeing in this World Cup for Pakistan? पूरे आपने एक मुल्क की आपने जो फीलिंग है ना वो आपने आई थिंक यहाँ पे आर्टिकुलेट कर दी कि 3 हफ्ते पहले जब इंडिया को 260 पे ऑल आउट कर रहे थे और 3 आपके फास्ट बॉलर्स छूछा वो वेस्ट इंडियन पेस क्वार्टेट की तरह तस्वीरें खींच रही थी और ये सब थे 140 145 प्लस और आप नंबर 1 रैंक साइड थे और फिर अचानक से एक आपने रिजर्व डे कहाँ मांग लिया एक मैच में वो रिजर्व डे आप मांग कहाँ लिया भाई नहीं नहीं ये गलत है पीसीबी वालों ने मांगा PCB pushed for that reserve day in return for not moving the games to Humban Road. तो ये आपने basically अपने ही पाव पे कुल्हाड़ी मारी है and like obviously other people benefited from like there being a reserve day I for that mean वो game. पाँव पे कुल्हाड़ी इसलिए मारी थी क्योंकि वो जैसा कहता कि या गर्दन पे मारो या पैर पे मारो तो उन्होंने ठीक है पैर पे मार लेते हैं ब्रो. So वो जो उस वक्त जो फीलिंग थी ना पाकिस्तान की वो अब नहीं है बट इसमें यार थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी मैंने इनफैक्ट पीस लिखा था पाकिस्तान के बारे में लाइक आई थिंक थोड़ा पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है फखर जमान का फॉर्म बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है ये वो बहुत ही बुरा आउट ऑफ फॉर्म है ही लाइक ओके यार ही इज नॉट बीइंग द फखर जमान दैट वी नो एंड लाइक काइंड ऑफ एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान बट एक तो उसके क्या 9 या 10 इनिंग्स है आई थिंक जिसमें उसने नहीं परफॉर्म करा है थोड़ा सा डाउट आया है उसमें बट ही इज ऑलवेज स्ट्रक मी एज द काइंड ऑफ प्लेयर कि वो एक गेम स्कोर कर लेना like he gets through that one period then it's very difficult to kind of stop him after that and he gets through like maybe a 50 or something he makes like a really scratchy ugly 50 edge कर दिया third man forward कहीं ना उसने एक 60 ball 50 निकाल ली and I feel like he's the kind of batter जो उसके बाद से turn करता है and like the other point about Fakhar is that I don't know right now Pakistan अगर सोच भी रहा है उसे drop करने की I don't think they're thinking about dropping him for that first game but like he is clearly the guy in that top order, in that top 4, who will make your like 280 score into 330, 350 score. He's like 100% Fakhar is the guy who's going to do that. आज मैं stat देख रहा था कल पाकिस्तान के 12 330 plus totals हैं वनडेज में since Fakhar made his debut. By the way, out of 29 overall, तो जब से Fakhar ने अपना debut बनाया है 29 में से 12 उनके 330 plus totals हैं. Fakhar has scored 400s and 350s in those. At an average of 92 and at a strike rate of like 115 or something ridiculous. So he's the guy who's gonna basically give you that start, which is gonna give you that big total. So you have to. He's the one guy in that order, in that top order who's good. You have to stick with him. I think it's a no-brainer. दूसरी बात, I don't know. Like I wanted to actually pick your brain. कि Shadab is the other, I think, big concern for Pakistan. I don't think there's any kind of doubt कि जिस तरह की Shadab की bowling हुई है in the last 4 or 5 months, but maybe actually longer term is format mein, ODIs mein, since the last World Cup. My personal thing is that I don't feel like he's played enough ODIs to really kind of develop as an ODI bowler as much जितना वो T20s में develop हुआ है पिछले 2-3 साल में. Yeah, I mean, I feel this is one of the frustrations we're trying to get to analytical about the one day game because what context are you playing with? Yeah. Like
with T20, because of franchise cricket, all these guys are playing high pressure T20 games. So Yeah. you're developing your skills that way. From what we keep hearing from the camp, oh, but Shadab is not really looking at a lot of these bilateral matches as like I need to bowl at my best, but maybe trying to kind of try new things and find this rhythm, that rhythm, or whatever. And it's really hard to kind of argue against that because there's just not that many opportunities for him to be bowling that way. Or आई थिंक कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमने बॉलिंग देखी है पिछले कुछ महीनों में इज नॉट जो आप चाहेंगे शादाब से. बट आई थिंक मेरे दिमाग में हमेशा सवाल यही उठता है कि इज दैट बिकॉज these are kind of meaningless kind of matches and he has to find his form back or whatever. So I don't really have any good answers to it. I think it definitely issue है. I think मुझे जो ज़्यादा परेशानी यही है कि अगर हम किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बैटर्स की अहमियत की बात कर रहे हैं, so like that's just that's I'm losing hope because like I think that's where the importance of Shadab comes in. कि अगर शादाब की Yeah. bowling चल रही है, अगर पाकिस्तान की bowling चल रही है, तो yes, I can see us do something in it. What I'm really worried about is that like the last World Cup, we lose crucial matches early, and then we're an entertaining side that really is not going to make the knockouts. Um, The nearly like 92 run, the nearly 92 yeah, 2019. yeah, 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 yeah. The 2019 run, basically. Yeah, I Um, feel I think Abibi team, like, it's a good side, right? I don't think there's any doubt about that. It's a side with good players. I know Naseem ka bahut hi ek bada blow hai to not have Naseem there, but you have, like, I was looking at Mohammad Wasim. Mohammad Wasim's his career so far, it's not a bad career. He's had like some decent results. He's played well. He's done well in ODIs against Australia, against New Zealand. He's a good bowler. yeah, but I mean, I don't think like Naseem ka, I feel that was like Naseem could have had such a huge tour. So I think it's that. I'm not too worried about the bowling, but the thing is, कि आपके पास you don't have explosive batters, right? And you have a lot of anchors in the side. And unless we have a low scoring tournament, that's always going to be a problem. Yeah, but that's the thing. I don't think I think on these pitches, on most of the pitches they'll come across, I think Pakistan's bowling might get exposed. Like, so the point about Shadab, mein ek point karna cha raha tha कि and this is not on him at all, but I think like Shadab, Pakistan, by default they're using him as a lead spinner. Like, he's your specialist wicket taking spinner, and he's not. He's much more than that. He's a very still underappreciated batter, I think, whose game in ODIs has actually improved as a batter. Great fielder, obviously, all-time fielder, and clearly like strategic input into how the side plays on the day. So he is like a very good second spinner in the side. Like, if you think of somebody like Ravi Jadeja as an example, he's a very good second spinner in that side. But you need to have another specialist spinner there, which I think they have Osama Mir there, and he like definitely should be there. But I feel like they've missed an opportunity with developing Osama a bit more. One, and if you wanted like not just two leggies, मगर अब्रार को आप थोड़ा सा good time जैसे develop करने का, अब्रार को तो यार 6 साल पहले निकी आर्थर देख के कह रहा था कराची किंग्स पे कि यार this guy is the answer to our middle overs white ball problems. तो आप, I know he had injuries in the middle and stuff, but like it's taken him this long to get here. And actually, Abrar was the surprise about Abrar's story this last year was कि वो test में चल रहा है now. Because we always kind of had him as a white ball bowler, and Yeah. I still think he can be a good white ball bowler. I know there was a push to get him into the main squad for the white ball. So, अगर आपके पास एक specialist spinner कहीं से आ जाए, then Shadab I think becomes like an even more valuable as a guy who can truly be that all-rounder. That who bats, who has a responsibility to bat, and the burden of spin bowling, carrying that spin bowling attack, is not purely on him. I think that makes a difference in a 50 over game. I think it makes a difference. For sure, but I think कि मेरा अभी भी वही होगा कि अगर आपकी कोई भी ऐसी पिच है जहाँ पे पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हो रही है, so that suggests कि वहाँ पे generally batting is easier, और that difference और टीमों की बैटिंग एक्सप्लोसिवनेस में जो फर्क है, जो वनडेज में इतना फर्क नहीं पड़ता जब तक T20s में पड़ता है, बट आई थिंक कि वहाँ पे आज जो न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से जो टैक्टिक्स किए थे, where they attacked in the middle overs and broke the English innings before it could really get somewhere.
that kind of proactiveness would be needed to keep the scores at a level that Pakistan can chase them or contain them. क्योंकि Yeah, अगर आप बिल्कुल खुला हो जाएंगे तो फिर तो वही सीन I saw Glenn Phillips take those 2 wickets today, and I was like, Ifti Chachu, hello. है. I want some more Ifti Chachu here. Hello, come Yo, on. man of the tournament. Ifti Chachu, amazing. That's it. As a That's it. 35-year-old. Yes, 35 is what we're going with. I don't think he Iftikhar actually was, he performed at the 1975 opening ceremony. Just he was there when opening ceremonies were a thing at World Cups. Ifti Chachu was there. yeah. But okay, we've gone longer than we'd anticipated on this show tonight. We're going to be back tomorrow, Pakistan के match के बाद, और फिर हमारा plan है to cover every Pakistan match, to cover all the knockouts, and then do a bit in the middle as well. We hope to see you at all these episodes. Use the comments. आप अपनी राय दें, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, शादाब के साथ क्या होगा, फखर के साथ क्या होगा, इस वर्ल्ड कप के साथ क्या होगा. Till then, from you, Usman, goodbye.